हेलो एवरीवन वेलकम टू इंट्रिंसिक लर्नर्स आम प्रीवियस वीडियोज 70 पर्यंत क्वेश्चन सारी देते ये आम 71 रु 100 पर्यंत क्वेश्चन देखा। तो चलो स्टार्ट करवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट? डिक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो हेनी, डिक्लाइन इन सोशल कोहेशन नो, देन आसब ऑप्शन increase economic growth and productivity, which is the right option. In balancing national debt, no, C is most appropriate. According how does education help in creating a skilled workforce for national development? A, isolating student from new technologies, no, providing basic literacy and vocational education, which will be the right answer. Promoting outdated traditional, 9, focusing on theoretical subject only, no. तो राइट आंसर हो बी, प्रोवाइडिंग बेसिक लिटरेसी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग कहले आम कौन बुझीपर, इट इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन जोटा आम देबा विच विल बी हेल्पफुल फॉर गेटिंग जॉब, माने आम ताको स्किल्ड बनेबा। वी विल गिव देम प्रैक्टिकल नॉलेज, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, सो दैट दे विल गेट जॉब इजीली। तापरे कौन 73, one of the key benefit of investing in education for human resource development is increase expenditure, no, producing skilled manpower, or increasing gross enrollment ratio, or creating sustainable economic। यार ऑप्शन हो बी, प्रोड्यूसिंग स्किल्ड मैन पावर। ह्यूमन रिसोर्स आम एमती बनवा जोटा कि स्किल्ड मैन पावर तैयारी करथवा दरकार। देन क्वेश्चन नंबर 74, how does education contribute to personal development of individual, which is essential for human resource development? By reducing the cost of lecture, 9, by increasing the number of workers in the country, no, increase खाली कर देले हबनी, they should be capable of doing things. So by enhancing critical thinking, problem solving and adaptability, which will be the right answer. Exposing to new ideas and skill, ठीक लगुच, बट मोर एप्रोप्रिएट इज बाय एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। ताको फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग आसुवा दरकार। देन क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी consider an economic benefit of investing in education? Increased income inequality, decreased level of national innovation, improving productivity leading to high national output, or limiting access to global job। यार ऑप्शन पढ़िले आपन को कौन लगुच? यार ऑप्शन हो राइट, improved productivity leading to higher national output। Then question number 76, the RT Act 2009 was enacted to give effect to which constitutional amendment? एटा आपन पढ़िथु जदि बहुत ठीक से कर परिबे। यार ऑप्शन हो डी, 86 amendment। 77, which of the following article of Indian Constitution prohibit religion institution and teaching in state aided institute established to impact education? यार ऑप्शन हो राइट, आर्टिकल 28। किसी आर्टिकल अच्छी एजुकेशन रिलेटेड जमी आर्टिकल 21A, 28, 29, किसी जो आर्टिकल्स गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे, तो से गुड़ा सब आम देखिकी जावा। ओके, then coming to question number 78, National Curriculum Framework 2005 strongly recommend that teaching of EVS at the primary stage should primarily aim at linking classroom learning to the life outside the school। आमे खाली क्लासरूम पर्यंत लर्निंग टाको सीमित रखले हेनी, वी विल लर्न आउटसाइड द स्कूल ऑल्सो एंड लिंक इट टू द रियल लाइफ वर्ल्ड। ओके, then question number 79, a common educational structure of 10 plus 2 plus 3 for the whole country was recommended by, yes it is right, educational commission। जितनी की भी commission अच्छी, I will make a video on that which is very important from the exam point of view। okay, then question number 80, the program which was launched as a result of NPE 1986 to provide basic infrastructure to primary schools is Operation Blackboard। it will be the right answer। Then question number 81, which of the following is a major developmental task of adolescence? Understanding
performance, developing a sense of identity, learning basic motor skill, or learning to talk without inhibition. It will be developing a sense of identity. जेतेबेले गोटे स्टूडेंट एडोलेसेंस फेज को आसे, he search for his or her own identity. सीए किए, तार रोल कौन, से कौन पाई आसीचे, what is his true self. He tried to recognize that जोतिपाई कि केबे केबे he is in confusion state and he is in like discovering stage. तो सी निजर आइडेंटिटी बनया पे चेष्टा करे, developing a sense of identity. Then question number 82. According to Erikson, which stage of psychological development occur during adolescence? मैं कहली identity and role confusion से माने जो identity खोजिबे आउ तांको टिके confusion भी हबो से कोन से केमती आपण माने समझते से आमे सब फेज रे से माने जाई सारचो तो आमे जानिचो ठीक अच्छे आउ यार जो एरिक्सन अकॉर्डिंग एरिक्सन रो 8टा स्टेज अच्छी. I will make video on that also which is very important ठीक अच्छे. तो coming to next 83. A teacher can best support adolescent student by encouraging self expression and critical thinking. एटा ही राइट आंसर हम ताको एनकरेज करवा केमती से माने निज को एक्सप्रेस करि परिबे. Forcing them to follow rules, no. Discouraging peer interaction, no. Ignoring their emotional stress, which is no. Then question number 84. Which of the following is not an area of learning differences? Learning style, socio-economic background, cognitive ability, or uniform school curriculum? It is uniform school curriculum. डिफरेन्सेस ना ना लर्नर डिफरेन्सेस को नॉट लिखा है नॉट लर्निंग डिफरेन्सेस यदि से यूनिफॉर्म हम ताले डिफरेन्सेस केमती हम तो ऑप्शन विल बी डी. देन क्वेश्चन नंबर 85. A teacher noticed that one student learns best by listening to lectures while another prefer learning by reading books. This difference is due to learning style. समस्तंकर learning style different, so we must recognize every student's ability to learn. ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମେଥଡ଼ କ'ଣ ସେ କେଉଁଥିରେ ଜଲ୍ଦି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରାସ୍ପ କରିପାରୁଛନ୍ତି. ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ. ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 86. ଦ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ. ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ. ଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଠିକ୍ସେ ସେମାନେ pronounce କରିପାରିବେନି या फिर କହିପାରିବେନି ଠିକ୍ ଅଛି. Then question number 87. Which of the following is not a factor affecting individual differences in learning? माने ये क्वेश्चन टा टिके कंफ्यूजिंग लागुथो कम पाई लिखा है कि नॉट मु लिखी एफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेन्सेस. आम फर्स्ट देखिए कि कौटा इंडिविजुअल डिफरेन्स को एफेक्ट करे. एज तो एफेक्ट करे समस्तंकर अलग अलग एज हिसाब से समस्तंकर ग्रेस्पिंग कैपेसिटी भी अलग था. देन मोटिवेशन भी समस्तंकर डिफरेंट था. लर्निंग एनवायरनमेंट भी समस्तंकर डिफरेंट था. यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड जो यूनिफॉर्म आसी जाइए तो ऑब्वियसली गोटे जदि आम गोटे यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड समस्त को दबा तो यार यहाँ नॉट रे आसी जाउछि नॉट अ फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस. आई होप यू गेट इट. देन क्वेश्चन नंबर 88. Which of the following is a formal method of studying learner behavior? यार ऑप्शन हो D. Psychological test. Then question number 89. A teacher observes a child in different situation over time without interfering. This type of observation is called natural observation. से naturally ताको observe करुचे. पार्टिसिपेटरी ताको कह जो थे कि गोटे टीचर ताको ऑलरेडी कही थे स्टूडेंट को कि यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन एंड स्टूडेंट एंड टीचर बोथ आर पार्टिसिपेटिंग नोइंग दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. और कंट्रोल्ड रे हम कि जोटा आम गोटे कंट्रोल्ड कंडीशन आइदर आम विदिन ए क्लासरूम आम ताको स्टडी करुचु सर्टेन आमर क्राइटेरिया थी आम कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कहवा. एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन हेनी बिकॉज वी आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ये हम कहीं आम डिफरेंट सिचुएशन ऑब्जर्व कर इंटरफेयर भी करूँ. सी तार कम कर तार खाऊँ बुलूची बाहर ता सांग सहित खेलुची से केमती क्लास रे आंसर दौची. तो ये आम वेरी नेचुरली आम गोटे स्टूडेंट को स्टडी करूँ विच विल बी अंडर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 90. Which method is best suited for understanding an individual learner personal challenges and development? आमे तार केस स्टडी करवा. सब फर्स्ट
we will do a case study to understand the individual learner's personal challenges. Then question number 91. Skinner's operant conditioning emphasize on. यदि आप स्किनर पढ़िथिबे ताहले आपण यार आंसर दे परिबे निजे कौन हबो. Question number D, reward and reinforcement. Then question number 92. In Vygotsky's theory, the term scaffolding referred to. Scaffolding means it is a temporary support gives to learner to be gradually withdrawn. Then question number 93. According to a Piaget theory, the process of changing existing cognitive schemas to incorporate new information, it is called accommodation, not assimilation. Assimilation कहले आमे कौन बुझिया. Piaget दीटा theory अछि, assimilation and accommodation. एटी लिखा अछि changing existing cognitive schema to incorporate new information. आमे गोटे बिलेई को बिलेई कहते आमे कहबा कि नहीं ये बिलेई नुहे, ये होछि कुकुर, ये कुकुर भलिया भुकुछ तो ये हला कुकुर. आमे सेटा को एकोमोडेट करिले कि आमे बिलेई को कुकुर करिले, बिलेई को से भूलिला देन कुकुर को से एडॉप्ट कला, तो एटा एकोमोडेशन हबो. एसिमुलेशन माने कोन, जति गोटे नुआ जिंस गैदर करिवो. जेमति मु कहली कि बिलेई रो चारटा गोड़ अछि, से जानि छि बिलेई रो चारटा गोड़ अछि, तापरे मु ताको कहबी कि बिलेई रो गोटे लांगोड़ भी अछि, तो से ताको ऐड कला आ गोटे इन्फॉर्मेशन, तो ताको कहवा जेवो एसिमुलेशन. देन कमिंग टू नेक्स्ट 94. Which of the following does not come under Gardner multiple intelligence category? It will be emotional intelligence. Then 95. Raven's progression metric is an example of a test that measures non-verbal abstract reasoning. या विषय में पूरा पढ़ा Raven progress metrics विषय. Otherwise we cannot answer this type of question. Then question number 96. The stage in the creative process where an individual takes a temporary break, allowing idea to mature subconsciously, is known as incubation, right? Then coming to question number 97. The characteristics commonly associated with creative individual is resilience on conventional solution, risk-taking behavior, performance of routine task, high tolerance for ambiguity. It will be मतलब टिके confusing होगा, A और B रे बहुत confusing थिली, but the option correct is B, risk-taking behavior. 98. In the context of learning model, what does asynchronous learning refer to? Asynchronous refer to learning that does not occur in same place or at same time. Synchronize होने ना different place रहोचे with different time रे, ताको हमें asynchronous learning कहवा. Then coming to 99. What role does the physical environment plays in managing a heterogeneous classroom? Heterogeneous classroom कहले कौन बुझिबा, सब प्रकार स्टूडेंट थिबे, सब वर्गर स्टूडेंट थिबे, different learning abilities of student थिबे, so that's called heterogeneous classroom. The physical environment best कोटा, it creates a safe, accessible and conductive space for learning. समस्त पई safe और accessible थिबा दरकार, गोटे safe space provide करथबा दरकार. Then coming to question number 900, the last question. How can a teacher create a classroom environment that fosters creativity? Limiting discussion? No. Discouraging mistakes to maintain accuracy? No. Encouraging openness in expression of idea? ठीक पूरा ही ठीक. C. Encouraging openness in only reward correct the answer. No. C is the right option. So that's all. We have completed the whole 1 to 100 questions that came in 2025 EMED. I hope you all understand, and if you have any doubt, please put that on comment section. I will try to figure it out and answer. Thank you so much.